We are doing a discussion regarding the mesh analysis. And until now, we have discussed different scenarios in which we had just the voltage sources in the network. Then we considered the presence of the current sources in such a way that there was only one mesh current unique flowing through each current source. And then we discussed that how we are going to perform the mesh analysis if a current source is common between 2 or 3 different mesh currents. So we formed the super mesh in that particular case. Now what we are going to do is that we are going to consider the presence of the independent, the presence of the dependent sources. Because until now we have considered only the presence of the independent sources. Now we are going to consider that how we are going to perform the circuit analysis if we have the dependent sources connected in the circuit. So let us consider a small example in which we have a dependent source which is 2Vx. So we have a voltage controlled voltage source. ये प्लस माइनस का जो सिंबल है इससे हमें पता लगा ये वोल्टेज सोर्स है और इसकी वैल्यू है 2Vx, यानी कि इसकी वैल्यू डिपेंडेंट है किसी और वोल्टेज के ऊपर. So that is why we are saying that it is a voltage controlled voltage source. We have a 2 kilo ohm resistor. We have another 4 kilo ohm resistor. We have a 3 volts voltage source. And we have a 6 kilo ohm resistor. And we have to find out the output voltage by performing the mesh analysis. Now this V0 is the voltage across this 6 kilo ohm resistor. And we have to find out the value of this V0 by using mesh analysis. So as far as the first step is concerned, it is going to be, this is say I1 and this is I2. We are also given that this is Vx. This is Vx. Now, is there any information which is available from the circuit? Yes, there is one particular information which is available from the circuit. There are a couple of informations which we can deduce from the circuit by inspection. This V0 is the voltage across this 6 kilo ohm resistor. And the given polarity is the upper terminal of the 6K is positive and the below or the lower terminal is the negative one. Then by using Ohm's law, the value of V0 will be equal to 6K into I2. This is my question number 1. So it means that I need to find out the value of I2. Is there any other information which I can deduce from the circuit? Yes, there is another equation. What will be the value of the Vx? The value of Vx will be equal to 4K. 4K is the value of the resistance into the current which is flowing through this resistor. And what is the current which is flowing through this 4K resistor? It is I1 minus I2. मैंने I2 minus I1 क्यों नहीं किया? क्योंकि this current I1 is flowing from top to the bottom. And by the passive sign convention, it is entering the positive terminal. By passive sign convention, we know that if the current is entering the positive terminal for the resistor, abhi jo I1 it is entering the positive terminal of the 4K resistor. So it means that by the passive sign convention should be a positive current. जबकि I2 का जहां तक ताल्लुक है, it is entering the negative terminal of the 4K, which is against the passive sign convention, because passive sign convention tell us that for the resistors, the passive elements, the current enters the positive terminal and leaves from the negative terminal. So this I1 is following the passive sign convention for K, but this I2 is not following the passive sign convention for 4K. So I have taken it as I1 minus I2. We know that for sure that the net current will be from positive to the negative. That is from top to the bottom. A net current will be from top to the bottom by the passive sign convention by the marked polarity given to us. So I1 is flowing from top to the bottom, but I2 is flowing from bottom to the top. So the net current from top to the bottom will be I1 minus I2. So 4K into I1 minus I2. This is the value of the Vx. अब अगर मुझे I1 और I2 की वैल्यू पता लग जाए तो मैं Vx और V0 दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ.
So let me apply KVL to I1. Let me apply KVL to I1. I will apply by using the third method, in which पहले सबसे आगे 2K आ गया, 2K में से कौन सी करंट फ्लो कर रही है, सिर्फ I1 फ्लो कर रही है, सो I1, फिर आगे प्लस ये 4K आ गया मेरे पास, इनटू इसमें से मैं किसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, I1 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, सो I1 को पॉजिटिव और कोई करंट है तो वो माइनस में, 4K में कोई करंट फ्लो कर रही है वो कौन सी Y2 है, सो ये क्या हो गया माइनस I2। जब मैं यहां पर आया तो आगे क्या आ गया -2Vx, सो -2Vx इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करें, I1 वाली टर्म्स को अलग कर लीजिए और I2 वाली टर्म्स को अलग कर लीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल ऑब्टेन 6K I1 minus 4K I2, ये 2Vx पर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, सो इट विल बी 2Vx। ठीक है, बल्कि इसको ना ही करें, आप इसको यहां पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, इक्वेशन नंबर 2 को इस इक्वेशन नंबर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आपके पास क्या आएगा -2 इंटू 4K इंटू I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। मैंने Vx की जगह Vx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है यहाँ पे, 2 इंटू 4 8K हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 6K I1 माइनस 4K I2, ये क्या होगा 2 इंटू 4 8 माइनस 8K इंटू I1 कितना होगा -8K I1, और फिर -2 इंटू 4K -8K इंटू माइनस I2 विल बी इक्वल टू प्लस 8K I2 प्लस 8K I2 इज इक्वल टू 0। इसको से मैनिपुलेट कर लीजिए, तो 6K में से गया तो आपस आ गया -2K I1 प्लस 4K I2 is equal to 0. So this is my equation number 3. Now let me apply KVL on I2. Let me apply KVL on I2. सबसे पहले क्या आया जी, मेरे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करते ये 3 वोल्ट आया, इसका पहले नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है मेरे पास, सो -3, फिर आगे आ रहा है ये 6K, जो सा भी रेजिस्टर आएगा आपने इसको सबसे पहले रेजिस्टर की वैल्यू लिख ली, फिर आपने देखना इसमें से करंट कौन सी फ्लो कर रही है, सिर्फ एक ही करंट फ्लो कर रहा है I2, सो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास I2, फिर आप आगे आपके पास अगला रेजिस्टर आ गया 4K, तो आपने क्या रेजिस्टर की सबसे पहली वैल्यू लिख ली प्लस 4K करके। अब इसमें से करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, I2 भी फ्लो कर रहा है और I1 भी फ्लो कर रहा है, आप अप्लाई किसके ऊपर कर रहे हैं, I2 पे कर रहे हैं, जिसको आप अप्लाई कर रहे हैं वो पॉजिटिव ले रहा है, बाकी जितने भी करंट इसमें से फ्लो कर रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में वो आपने माइनस में ले ली, इज इक्वल टू 0 कर दिया आपने। ठीक है, अब I2 और I1 वाली टर्म्स अलग अलग कर लीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा -4K I1 plus 10K I2 is equal to 3. So this is your equation number 4. In equation number 3 and equation number 4, we have two unknowns. One is I1 and the other one is I2. So by using the calculator, we can find out the value of I1 as well as the value of I2. So by solving, the value of I1 will be equal to 3 milliamperes and the value of I2 will be equal to 1.5 milliamperes. Substitute this in equation number 1. So the value of output will be equal to 6K into 1.5 millis, which is equal to 9 volts. So your output value is equal to 9 volts. तो आपने यहाँ पे देखें, बिल्कुल भी देख इसको घबराना नहीं है आपने, ठीक है। इसका जो भी कंट्रोलिंग वेरिएबल है Vx है या जोन सा भी है, तो आपने उसको डिफाइन कर लेना इन टर्म्स ऑफ द मैश करंट्स। नोडल एनालिसिस के अंदर और डिपेंडेंट सोर्स आता था, तो आपने उसका जो कंट्रोल वेरिएबल होता था आप उसको डिफाइन कर लेते थे इन टर्म्स ऑफ द नोडल वोल्टेजेस। अब यहाँ पे आपने क्या कर लेना है, जो भी इसका कंट्रोलिंग वेरिएबल है आपने उसको डिफाइन कर लेना इन टर्म्स ऑफ द मैश करंट्स। ठीक है, आप बस एक इक्वेशन आ जाएगी एंड देन अब बाकी एनालिसिस बिल्कुल उस नहीं परफॉर्म करेंगे जिस तरह परफॉर्म करते थे अपने एक इंडिपेंडेंट सोर्स के लिए। सो ये हमने एक एग्जांपल करके देखिए कि हमने किस तरह डिपेंडेंट सोर्सेज को इनकॉर्पोरेट करना अपने एनालिसिस के अंदर। एक और प्रॉब्लम करते हैं जी जिसके अंदर हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स कनेक्टेड है सर्किट के अंदर।
we have a dependent current source and its value is equal to Vx over 2k. So it is a current source, dependent current source, symbol से हमें पता लग रहा है, और इसकी value क्या Vx by 2k. Its value depends upon a voltage. So it is a voltage controlled current source. We have a 2 kilo ohm resistor. We have a 4 kilo ohm resistor. The voltage here is Vx. We have a 2 milliampere current source. We have a 3 volt voltage source. And then we have a 6 kilo ohm resistor here. And the output voltage is what we need to find out by using the mesh analysis. In the very first step, I will form the meshes. So this is I1, this is I2, and say this is I3. So let us now inspect our circuit to find out what is the information which is available to us from the circuit. So I2 इस branch में flow कर रही है from top to the bottom. I2 इस branch में flow कर रही है from top to the bottom. लेकिन we are given that the current in this branch from top to the bottom is equal to 2 milliamperes. So it means that I2 is equal to 2 milliamperes. Question number 1. In this branch, the current from top to the bottom, from bottom to the top. यहाँ पे भी bottom to the top. I2 is from bottom to the top. And in this branch, the current from bottom to the top is 2 milliampere. So I2 is equal to 2 milliamperes. In this branch, the current from bottom to the top is I1. But we are given that the current in this branch forced by this source is equal to Vx over 2k. So इस branch की हमें current given है from bottom to the top, which is equal to Vx over 2k. So from here we can deduce that I1 is equal to Vx over 2k. This is my second equation. And then this V0. V0 is the voltage across 6k. ये positive और ये negative. So V0 is equal to 6k times I3. 6k I3. And finally we have this Vx. We have finally have this Vx. So this Vx will be equal to 4k with the resistance value into current should enter the positive terminal for the resistor. तो कौन सी करंट पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो रही है? I1 पॉजिटिव टर्मिनल में एंटर हो रही है. तो यहाँ पे I1 पॉजिटिव हो गया, लेकिन I2 जो है वो Vx के लिए नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हो रही है, 4k के लिए नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हो रही है. सो क्योंकि इट इज ऑपोजिट द पैसिव साइन कन्वेंशन, सो ये क्या हो गया माइनस I2. दिस इज इक्वेशन नंबर 4. ठीक हो गया. अब आप क्या कीजिए, ये इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो. ये 4 को 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यू विल ऑब्टेन I1 is equal to 4k into I1 minus I2 divided by 2k. आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा. So this will become I1 is equal to 2I1 minus 2I2. ये I1 को आप राइट हैंड साइड पे ले आइए, तो आपके पास क्या बन जाएगा, I1 minus 2I2 is equal to 0. This is your equation number 5. So this is your equation number 5. ठीक हो गया जी. और आप I2 की वैल्यू कितनी गिवन है, which is given to u is equal to 2 milliamperes. अब आप I2 की ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें. I2 की वैल्यू आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, you will obtain I1 is equal minus 2 into 2 millis is equal to 0, or I1 is equal to 4 milliamperes. This is your say equation number 6. So अब आपके पास I2 की वैल्यू भी आ गई और I1 की वैल्यू भी आ गई. सिर्फ एक काम होगा, वो कौन सा जी, I3. तब वो क्या है, I3 के ऊपर KVL अप्लाई कर दो. I3 के ऊपर KVL अप्लाई करना. मैं KVL की इक्वेशन लिखता हूँ जी यहाँ पे I3 के लिए. वो किस तरह लिखेंगे, और फोल्ड कर लूं अच्छे तरीके से. तो मैंने अब I3 को केवीएल अगर अप्लाई करना, तो क्या होगा I3 केवीएल अप्लाई करने के लिए,
मैं यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्टार्ट हुआ, सबसे पहले 6K आया, तो आपने 6K को लिख लिया। अब उसमें से करंट कौन सी फ्लो करे, सिर्फ एक करंट फ्लो करे, कौन सी, I3, तो मैंने यहाँ पे इसके साथ लिख लिया I3। फिर आगे आया तो ये 3 वोल्ट आया, 3 वोल्ट पर नेगेटिव टर्मिनल आया मेरे पास, सो मैंने इसको 3 कर दिया, -3 कर दिया। आगे आया 2K रेजिस्टर आ गया, सबसे पहले तो किया प्लस लिख के साथ 2K लिख दी। अब इसमें से करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, इस 2K में से I3 भी फ्लो कर रहा है और I1 भी फ्लो कर रहा है। मैं किसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ, I3 के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, सो जिसके लिए अप्लाई कर रहा हूँ करंट पॉजिटिव, बाकी करंट्स अगर उसको अपोज करें तो वो नेगेटिव, इक्वल टू 0। 1, 2 और 3 कंपोनेंट्स है, 3 ही वोल्टेज ड्रॉप होने चाहिए, 1, 3 ही वोल्टेजेस होनी चाहिए, ड्रॉप नहीं, 3 वोल्टेजेस होनी चाहिए, 1, 2 एंड 3 वोल्टेजेस। ठीक है, अब इस इक्वेशन पर कितने अननोन है, इस इक्वेशन में सिर्फ एक अननोन है, व्हिच इज I3, क्योंकि I1 की वैल्यू तो 4 मिली एम्पीयर हमने फाइंड आउट कर ली है, सिर्फ एक अननोन बचा आपके पास, वो कौन सा है, I3। ठीक है जी, सो बाय सॉल्विंग आप ये जो I1 की वैल्यू है आप यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है जी, सो दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ I3 टू बी इक्वल टू 1.375 milliamperes. 1.375 milliamperes. Substitute this value in equation number 3. So V naught will be equal to 6K times 1.375 millis, and this will be equal to 8.25 volts. So your output voltage will be equal to 8.25 volts. So this is another example that how we can perform the mesh analysis for a circuit containing the dependent sources. लेकिन यहाँ पे डिपेंडेंट करंट सोर्स है तो आपने उसको बिल्कुल उस तरह ही ट्रीट किया जिस तरह आप ट्रीट करते हैं इंडिपेंडेंट करंट सोर्स को। आपने लिख दिया है कि I1 की वैल्यू वही है जो इसमें से एक ही करंट फ्लो कर रही है, वो I1 फ्लो कर रहा है। I1 is flowing from bottom to the top in this branch. Similarly, Vx by 2K is flowing from bottom to the top in this branch, which is given to us. So from here we can deduce that I1 is equal to Vx over 2K. ठीक है जी, and then we perform the entire analysis. ठीक हो गया, और Vx को मैंने डिफाइन कर लिया, जो कंट्रोलिंग वेरिएबल उसको मैंने डिफाइन कर लिया इन टर्म्स ऑफ द मैश करंट्स। I1 को पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि I1 is entering the positive terminal for the 4K. ठीक है जी, तो पैसिव साइन कन्वेंशन करता है कि रेजिस्टर के लिए करंट पॉजिटिव टर्मिनल में ही एंटर होना चाहिए। जब ये I2 is entering the negative terminal which is against the passive sign convention, तो यहाँ पे मैंने इसको -I2 कर दिया। ठीक हो गया जी, so this is how I have performed the circuit analysis.